enzyme kinetics and blockers. Topic is the enzyme kinetics and blockers. Kinetics means the velocity of the enzyme reaction. Whensoever the enzyme acts or catalyzes any reaction, the velocity is one of the most important factor for the analysis of the product level or conversion of the substrate to the molar concentration of the substrate to the molar concentration of the products. And here in live classes, I told you that enzyme combines with the substrate to form the enzyme substrate complex, and during the association, the enzymatic bonds are reorganized. The bonds of the substrate are reorganized. It may be acidophilic, neutrophilic, or by the change of the acidic group or alkyl group. Whatsoever, mechanism is different. केमिस्ट्री में आप लोग देखे होइएगा कि डिफरेंट तरह के इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एंड कॉमनली द मैकेनिज्म इज डिफरेंट. यहाँ पे भी मैकेनिज्म होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं होगा. मैकेनिज्म इज जो उसका मैकेनिज्म है, या तो न्यूक्लियोफिलिक होगा या एसिडोफिलिक होगा, उसका जो भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, जो भी उसका है, फ्री रेडिकल्स होगा, जो भी उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म है. द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंडक्टेड हियर, and then the bonds of the substrate are reorganized. Bond of the substrate are reorganized. Then it forms enzyme product complex. Enzyme product complex, and thereafter the enzyme and products are separated. Enzyme and products are separated. Here, the reaction is occurred, and enzyme is only responsible for the activation energy. Only responsible for the change of the activation energy. That is, the enzyme is actually responsible for the decrease of the activation energy. And then, for these reactions, just I am giving some brief. The two models were presented. हम ऑनलाइन में बतला चुके हैं. One was presented by Emil Fischer. One was presented by Emil Fischer, and another by Kosland. One by Emil Fischer and another by Kosland. The Emil Fischer presented that the enzyme and substrates are configurationally compatible. Configurationally compatible. And that compatibility is responsible for the enzyme and substrate specificity. Clear? And that is referred as the lock and key model. Lock and key model. Likely, the key is specific for the each lock. And why? Due to the specific structure of the levers. And here, it is configurationally compatible. If the enzyme is compatible with the substrate, then only substrate can bind with the enzyme. And that particular site is referred as the activation site. That particular site is referred as the activation site. That means the complete enzyme is not responsible for the specific binding with the substrate. But
Here Emil Fischer, the concept of Emil Fischer or the model of Emil Fischer is questioned by the rigidity of the configuration. That is the configurational rigidity. Configurational rigidity. It is questioned by some workers that the Emil Fischer represents the configurational rigidity. Why so? Koshland again represented the another model, that is the induced fit model. It is referred as induced fit model. Induced fit model. All topics are described in my live class. Live में हम बात किए हुए हैं. The induced fit model suggested that when substrate comes in the contact with the enzyme, ठीक है, then it reorganizes configurationally. And the specific amino acids of the enzyme or polypeptide chain of any enzyme is reorganized to form the active site for the attachment of the specific substrate, and then substrate attached with the enzyme. Why so? It is about an induced fit. At first, the configuration is induced or reorganized when it comes in contact with the substrate, and then substrate can only bind. And if we observe any enzyme, suppose it is the polypeptide chain. It is the polypeptide chain. Then when it comes contact with the substrate, the enzyme is configurationally reorganized and suppose this one is the anyway, this site is formed collectively the active or recognition site. Active or recognition site. This one is the active site. Active or recognition site. That means here the part of the polypeptide chain A, B and C are collectively responsible for the formation of the active site. The amino acids present at the A, B and C. It may be A is here, B is here and C is here. This one is the part of A, this one is the B and this one is the C. That means the amino acids responsible for the formation of the active sites are not linearly arranged. It may be scattered from the different places of the polypeptide chain, and then it is responsible for the active site. And these are the basic models for the enzyme mechanism, enzymatic mechanism. Clear? And again, if we study the kinetics, that is the velocity or rate of the enzymatic reaction. Kinetics or velocity or rate of the reactions of the enzyme. And here, at first,
Michaelis and Menton presented the kinetics relationship of the enzyme, substrate and products. And two components are necessary to understand properly: Vmax and Km. These are the two terms used for the study of the kinetics, enzymatic kinetics. What is Vmax? The Vmax represents maximum velocity, maximum velocity of enzyme, maximum velocity of enzyme. That means if the 100% saturation of active site of enzyme is occurred, then the molar concentration of product per second is referred as Vmax. Is referred as Vmax. That is the conversion, rate of conversion. And Km represents, it is also known as the Michaelis constant. Sorry. Michaelis constant. Initially, it represents the half of Vmax. It represents half of Vmax. And secondly, it also represents the degree of affinity. Represents the degree of affinity. Degree of affinity between active site and substrate. Active site and substrate. Third one, next, it represents the velocity at the equilibrium. That is the velocity at the equilibrium. Represents velocity at equilibrium. These are the properties of the Vmax or Km. Vmax or Km. And if we study here or see here the substrate enzyme plus substrate and enzyme product, because it is reversible,
initially the V0 is maximum as, sorry, at the K time. That is the V0. And when it is initiated, that is K T minus 1 time, when time is a span, it proceeds forward up to the equilibrium. Up to the equilibrium. And here, these four graphs represent the relationship, four different relationships. Here, the enzymes differ in the Vmax. Here, the Vmax is 20 millimole per second. And here, the Vmax is 30 millimole per second. Clear? Generally, the relationship or graphical representation of the Vmax and concentration, change of the concentration of the substrate is hyperbolic quadratic representation. This is commonly the hyperbolic है and quadratic, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में. Hyperbolic, quadratic, hyperbolic, if it is asked in the examination, then it is a hyperbolic quadratic representation. Hyperbolic है और quadratic है. Again, the two natures are also. One is the asymptomatic. That means the graph does not touch either x-axis or y-axis. That is the asymptomatic. And third, in the initial stage, it represents the linear, then it forms the plateau. At initial stage, it represents the linear. That means it is the first order kinetics. It is the first order kinetics. If it is asked in the examination that in the earlier stage, what is the nature of the enzyme kinetics, that is the first order of kinetics. But in the last stage or in the final stage, it forms a plateau. It forms a plateau here. You see here. It forms a plateau. That means it represents the zero kinetics. इसमें लोग लड़के कंफ्यूज करते हैं, वो रिएक्शन वाले में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लिख देता है. नहीं, काइनेटिक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर एट द इनिशियली एंड इन द लास्ट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द प्लेटू. दैट मीन्स द काइनेटिक्स बिकम्स ए कांस्टेंट लेवल. काइनेटिक्स कहाँ पे हो जा रहा है? इट रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट लेवल. दैट मीन्स it becomes the zero. Kinetics of the enzyme at the final stage or at the termination point, it becomes the zero. And here the enzyme represents changes in the Vmax. Changes in the Vmax. But the Km value is constant. Km value is constant. It represents the Vmax. Here the Vmax is changed from 20 millimole per second to 30 millimole per second. And when the 30 millimole per second represented by the equation, that is the half of Vmax is 15 around. And that means it forms the Km value is constant. Km पे कोई अंतर नहीं आ रहा है. And here again the velocity is the 20 millimole per second, but the Km value is again constant. That means the enzymes represent constant Km value. Constant Km value means the same degree of affinity in between the substrate and enzyme, but it differs in the Vmax. It differs in the Vmax. In the second stage, it represents the nature of the Vmax, and it represents the nature of the Km. Last two graphs represent the nature of the Km. That means here the Vmax is constant. Vmax is here 20, here also 25, and here also 25. Vmax is 25. That means half Vmax is the 12.5. Half Vmax is the
12.5, and at the half of Vmax, the concentration affinity or concentration level in the system represent the Km, and that means here it represents the change in the Km value. Here it represents the change in the Km value. That means it represents the variation in the affinity in between the substrate and enzymes. Clear? रेट था, रेट दैट इज वेलोसिटी, इसी को हम वेलोसिटी बोल रहे हैं. रेट को हम क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी. ये क्या हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द काइनेटिक्स? माइनस चेंज इन सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय dt, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में सबस्ट्रेट में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द सेम टाइम. उसी टाइम में ये जब कन्वर्सन हो रहा है तो ये कन्वर्सन कहाँ पे जाएगा? द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट है वो कहाँ पे जा रहा है? प्रोडक्ट के रूप में. तो द कंसंट्रेशन, द वॉल्यूम या कंसंट्रेशन चेंज, सबस्ट्रेट चेंज इनटू द product, substrate is changed into the product within that same time, in the same time. That is referred as the velocity. That is referred to the velocity. When one thing again, KT, a term is known, KT or K cat, मतलब kinetics of catalysis. K cat, that is the kinetic of catalysis, and it represents turnover number. Turnover number. K cat represents the turnover number, and it appears from the name. नाम से ही ये क्लियर हुआ है कि turnover numbers क्या हुआ? The प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? प्रोडक्ट. ये क्या करेगा? प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. इसका यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट मिलीमोल पर सेकेंड, मिलीमोल पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड. इट इज द टर्नओवर वैल्यू, and it represents the number of products. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? The number of products formed per active site. यहीं पे, यहाँ पे मेन बात है. Per active site, products formed per active site per second, per second, per second. Then the velocity of reaction, velocity of reaction, it is velocity of reaction, जो कि V बोला गया, that is the V, जहाँ जो हम लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो भी लिखा गया है, दैट इज Vmax, Vmax मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज Km प्लस मोलर कंसंट्रेशन. इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे साफ साफ है. रेट दैट इज चेंज इन द substrate, molar concentration in the change of substrate divided by per unit time. या सेम चीज हुआ, the molar formation of the molar concentration of product in the change of time, because the substrate is converted into the product. Similar concentration change होता है product में. That is the another is the K cat, that is the kinetic catalysis. Kinetic catalysis. That is, एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, that is only the
यूनिट रिसेप्ट मतलब उसका जो एक्टिव साइट्स है दैट इज द रिसेप्टर साइट्स, ये यहाँ पे है टर्न ओवर नंबर दैट इज यूनिट पर टाइम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड पर एक्टिव साइट दैट इज ओनली, दिस वन इज मेमोरेबल, इसको याद रखें, पर एक्टिव साइट. And here the velocity of reaction that is Vmax molar concentration and Km plus molar concentration. इसको याद रखना है because sometimes the conversion, अगले हो सकता है इन नेक्स्ट क्लास में एक दिन और जब सॉल्यूशन में बतला देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, वो कॉन्सेंट्रेशंस दे देता है, Vmax का वैल्यू देता है, Km का वैल्यू देता है और बोलता है कि इसका कन्वर्सन रेट क्या है, वेलोसिटी क्या है, या इसका डिफरेंट नेचर्स को दे देगा, इसका इस नेचर को दे देगा. एंड समटाइम्स इट आस्क द चेंज इन द प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज यही करना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेशन आप V0 का देखिए और कॉन्सेंट्रेशन Ki का देखिए, K1 मतलब द चेंज इन द टाइम. तो जो कंसंट्रेशन का चेंज डिफरेंस होगा वहाँ पे थोड़ा सा लड़का कभी प्रॉब्लम में आ जाता है कि यहाँ तो ऐसा हम किए नहीं है, ये कैसे हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बात एक ही है, यहाँ से आपको कंसंट्रेशन मिल रहा है किस चीज़ का, Vmax के अनुसार एक वेलोसिटी, और उसके चेंज ऑफ टाइम को चेंज करिए और वहाँ पे उसका फिर कंसंट्रेशन निकाल लीजिए किस चीज़ का, सबस्ट्रेट का, बिकॉज उतने टाइम में उतना वो कन्वर्ट होगा तो उतना सबस्ट्रेट वो रिड्यूस कर जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. तो उसका जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको प्रोडक्ट का वैल्यू पता चल जाता है. क्लियर? हियर वी ऑब्जर्व द पैराबोलिक स्ट्रक्चर माने पैराबोलिक ग्राफ. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द Vmax or Km due to the parabolic nature, and particularly in the conditions of the inhibitors, or blockers, that is inhibitors or blockers. ठीक, ये वेन एंजाइम इज वर्क, एंजाइम अगर काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा काम करता रहेगा, उसके ब्लॉकिंग के कुछ मेटाबॉलिक भी होते हैं, कुछ पॉइजन्स होते हैं. पॉइजन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ द एंजाइम एक्टिविटीज़. जैसे आप शराब पीते हैं, आप नहीं जो पीते हैं इथानॉल के बदले अगर मिथानॉल पी ले तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा. दैट मिथानॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकेज ऑफ द एंजाइम, कौन सा, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज. तो दे आर द नंबर ऑफ पॉइजन्स, वो एंजाइम पे काम करते हैं. बहुत ऐसे हैं, न्यूरोटॉक्सिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज़ द ब्लॉकर ऑफ द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे हैं ऐसे. तो वो हम लोग उसको अब देखते हैं. यहाँ पे क्या है, ब्लॉकर्स. एक बार और ब्लैक टेस्ट कीजिए. हो गया. हो गया सब ब्लैक. Blockers, and commonly the blockers are of competitive blockers, non-competitive blockers, and mixed blockers. Blockers are divided into three parts: competitive blockers, non-competitive blockers, and mixed blockers. And here the competitive blocker, when we study the competitive, ठीक है ना, हाँ ठीक है, where we study the competitive blockers is responsible for the कॉम्पिटिटिव, मतलब क्या बोल रहा है, नाम ही बोल रहा है कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन बोल रहा है. कॉम्पिटिटिव शब्द क्या लगा हुआ है,
competitive blocker. तो that means the chemical or poison or metabolites has competition. उसको competition है, तो किससे competition होगा? Original substrate. Original substrate. इंजाइम हैज सम ओरिजिनल सबस्ट्रेट, इंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होगा और वहाँ पे वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी किससे हो रहा है? उसके एक्टिव साइट से हो रहा है, उसके एक्टिव साइट से हो रहा है. एंड इन द कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्लॉकर इज सेम एज द सबस्ट्रेट, एज द सबस्ट्रेट. अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका कंपटीशन शुरू होगा. देन the competitive blockers is associated with the active site of the respective enzyme, active site of the respective enzyme, and when the site is blocked by the blockers, then the substrate has no space to bind with the enzyme. Substrate के पास कोई space ही नहीं, वो कैसे bind करेगा? And in this condition it is responsible for the blockage. It is responsible for the blockage of the enzymatic activities. And sometimes the competitive blocking, अब two parts यहाँ पे हो सकते हैं. One, either is determined by the concentration gradient. If the concentration of the blocker is high than the substrate, then it binds. Or otherwise, if the Km value is much more than the substrate, that Km is responsible for the attachment. Km represents the, अभी तो हम just बोल रहे हैं, Km represents the degree of the capacity of the association with the substrate point. That means it is responsible for the association, and all such types are referred as the competitive blockers. ये जितने भी हैं वो क्या हैं? competitive blockers है. अभी हमने बोला आपको कि मिथाइल अल्कोहल क्या होगा? जान ले लेगा. तो मिथाइल अल्कोहल इज इटसेल्फ इज नॉट ब्लॉकर. ये बहुत कभी पूछा हुआ है, इसलिए मिथाइल अल्कोहल को यूज कर दिए. मिथाइल अल्कोहल अपने आप में, क्योंकि बहुत लोग दारू पीता है, लोग दारू पीने वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है परीक्षा में. तो मिथाइल अल्कोहल जो होगा ये डायरेक्ट बाइंड नहीं करता है. मिथाइल अल्कोहल हैज इफेक्ट ऑन द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, और क्या बोलते हैं उसको, कौन डिहाइड्रोजिनेज? अभी तो बोले हैं, अभी हम नाम बोले नहीं. That is responsible for the production of the energy. Lactic acid dehydrogenase. Lactic acid dehydrogenase. ठीक है. And या alcoholic dehydrogenase, जो भी आप बोलिए, alcoholic dehydrogenase. And here the methyl alcohol is converted into the formaldehyde. Is converted into the formaldehyde, and then formaldehyde acts as a blocker. That formaldehyde acts as a blocker. That means if the question is asked on the methyl alcohol, then methyl alcohol itself is not acts as a blocker. Methyl alcohol अपने आप में वो blocker नहीं है. But when any person ingests the methyl alcohol, it converts into the formaldehyde, and that formaldehyde is responsible for the blocking of the alcoholic dehydrogenase or lactic acid dehydrogenase. Second one is the non-competitive blocker. Second one is the non-competitive blocker. That means it is non-competitive. And in the specific configuration of enzyme, the active site is formed. In addition with the active site, some regulatory sites are also present. And that regulatory site is responsible for the maintenance of the enzymatic configuration. Responsible for the maintenance of the enzymatic configuration. And if any blocker is associated with the regulatory site and is responsible for the change of the configurational setup of the enzyme to distort the nature of the active site, because the active site is highly sensitive.
एक्टिव साइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ पर पर्टिकुलर जो पोलर अमीनो एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो जाते हैं और देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट जो काम कर रहा है वो क्या है, आदमी तो है नहीं, सांचा तो है नहीं वहाँ पे, ऐसा तो है कि ईंट का सांचा बना हुआ है। दैट अमीनो एसिड्स फॉर्म ए स्पेसिफिक नेचर एंड प्रोवाइड द साइट फॉर द बाइंडिंग साइट, प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट्स। तो वहाँ जो इंजाइमेटिक जो नेचर्स आ रहा है, सपोज हियर जस्ट आई एम फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड इफ द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट सम डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा भी अगर वो डिस्टॉर्शन कर दे रहा है अपने कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो एक्टिव साइट बन रहा था एक सॉकेट के रूप में हम जो कलर कर दिए थे, दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंसेस इन द नेचर, वो नेचर में क्या कर देगा, डिफरेंसेस शो कर देगा। एंड देन डिफरेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन एसोसिएशन इन बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जब उसका नेचर ही चेंज कर गया तो फिर वो कंबाइन नहीं करेगा। ऑल सच टाइप ऑफ ब्लॉकर्स आर रेफर्ड एज द नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। ओके, इसके अलावा सम एंजाइम्स आर मिक्स्ड ब्लॉकर्स, सम एंजाइम्स आर मिक्स्ड ब्लॉकर्स, दैट मीन्स एक्स as both, either as the competitive blocker as the non-competitive blocker. Sometimes another forms is also referred, that is a allosteric blocker, allosteric blocker, and then that allosteric blocking means the blocker is responsible for the complete distortion of the enzyme configuration. That is, in this condition, the enzyme is reused after the removal of the blockers from the enzymatic configuration. But in the allosteric blocking, that particular enzyme is completely distorted, and that distorted enzyme is not used again. उसको हम बाद में यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जो है दैट इज द न्यूरो ब्लॉकर्स, वो नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, एंजाइम को कंप्लीट ब्रेक कर देता है, मतलब दैट चेंज द परमानेंटली, द कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज परमानेंटली। दैट मीन्स कि उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में कुछ है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रहा है, किसी को हो गया, इसी रूम में बंद है, एसी खुल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया, तो उसको जस्ट आप जैसे ऑक्सीजन दीजिएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, खूब उसका पील लगा दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर, अब पूरा ऑक्सीजन ठेल दीजिए उसको बॉडी में, दैट रिप्लेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बिकॉज दे आर द कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, क्योंकि उसका केम ज़्यादा है तो वो अटैच कर गया। बट व्हेन वी प्रोवाइड द सफिशिएंट concentration of the oxygen, that they replace the carbon monoxide, तो आदमी बच जाएगा। But in the cyanide poisoning, it is not possible to convert the enzyme again as functional. Clear?